So today we are going to learn about this word final. So final keyword, what it is. Okay. So this is the keyword. This is also called as modifier. Final is an access modifier. Final is an access modifier, or a lot of people also call it as access specifier, but we will call it as access modifier. Access modifier keyword. Check. Final means complete. No more change. Final means no more change. And this keyword this final keyword is applicable for class, variable and methods. It is applicable for class, variable and methods. If class is made final, then that class cannot be inherited. If a class is made final, then that class cannot be inherited. If variable is made final, then variable value cannot be reassigned or changed or modified. If method is final, if method is made final, then that method cannot be overridden. Method cannot be overridden. That's it. Now let's try to understand this. Now if I try to create a subclass, now if this class, if I make this as final, now what happens? And if I try to extend the parent class, so I will get this error, extends parent class. So you will get compile time error. So what are you saying? Cannot inherit from a final class. What is the final class? Oops package, final keyword package, and inside that there is a class called as parent. So this class is a final class. So you cannot extend this class. So final class cannot be extended or inherited. Simple as that, nothing fancy in this. If a class is made final, then that class cannot be extended. If I make this as final, you cannot extend that. Now if I remove that, you are able to take. Now second, I have a method void display, and this is a method from parent class. Okay. And writing the same method with the same name, same signature, same return type, same signature. This is called as signature, same name, same return type. And I copy this method and write this inside the child class. Now this process is called as method overriding. Writing the same method in the subclass or in the child class with the same name, same signature,
Now this process is called as method overriding. Now if I make this method as final, now you get an error. What is the error? Display cannot override display in this particular class since overridden method is final. So you cannot override final method. Simple, very simple. So final class cannot be inherited. Final method cannot be overwritten. Okay. Now let's talk about a variable. Now I have a main method. There I have variable int a equal to, let's say, 100, and I print this value a. So value of a will be printed as 100. Simple. Now if I reassign the value of a, can I reassign? Reassign means changing the value of a. Now instead of 100 I want to change that to 200. Now if you see, earlier value of a is now replaced with 200. So this process is called as reassignment. This process is called as reassignment. So we can do this right now. This is earlier version. Now if I run this, your output will be once again 200. Now it will be 200 instead of 100 because earlier value is now changed. Now your new value will be 200. So this process, what we did, is called as reassignment. This is called as reassignment, right? Now if I make this variable final, what happens? You cannot do a reassignment. What happens? Once you make a variable final, then you cannot reassign the value. You cannot reassign the value, or you cannot change the value of a variable. That is the meaning of final. So if I make a variable final, then you cannot reassign the value. Okay, int b a. हाँ. हम a plus b. Now what I said, if a variable is made final, it means its value is final now. Its content cannot be changed. Whose content cannot be changed? A. So are we changing the content of a here? No. So we are doing just addition of a plus b, and that is assigned to c. That we can do. So what I meant is, I cannot change the value of a. This process चल जाएगा. Are we changing the value of a? No. Int d equal to a. So we are not changing the value of a. So we are just changing the value of d. So you cannot change the value of a. Once you define this as a final, then you cannot change that. You can use anywhere. So why we create constant? So why we create a final value? Because we do not want to change the value. We do not want to reassign the value. Once it is created, that's it, final. Clear on this? Okay. Now what are the different types of variables we have? Instance, local and static. Now there we have again two types of variables, primitive and non-primitive. Now if I make a primitive variable as final, you cannot reassign. Similarly, if I have a, now if you see this class, I will create a class, let's say create a class student. Now I have these variables, int id and string name. Okay, so I have these variables and these constructor. Now what I mean is, if I create the value, if I create the object of this one, student equal to new student, and I pass the value 100 and let's say searching. So I have created an object, right? Now if I make this as final, so what will happen? So can I change the content of student object now?
Yes. Now if you see here, student S is pointing to an object where values are 100 and let's say Sachin or ABC, whatever it is. Okay. Now what is this S contain? S contains S is a reference variable. It has memory address, and there is another. This is the container, which has a address, let's say 4 times 2. Then this S is pointing to this reference variable means now what I cannot change if I make S final. I cannot change this address. I cannot change the content. What is the content of S? Address of this object. So this reference variable cannot point to any other object. If it is pointing to any other object, then this address will change. Right? What I am saying? Now, if I create one more object, student 2. Okay. Now, if I say this student, let me make it as student 1. There are two objects, student 1 equal to student 2. Now, if I remove this, now I am able to assign. Now, what happens now? There are two objects. There are S1 is pointing to this object, S2 is pointing to this object. Now, if I write S1 equal to S2, so what will happen? Now, instead of S pointing to S1, this will point to this one. Now, this object is an unreferenced object, so this will be deleted. Now, both S1 and S2 are pointing to this object. So, this object, let's say this object contains address of 2222, right? Now, what S1 and S1, there will be two containers. S1, it will have address, let's say this one. S2 also has. Now, what is S1 equal to S2? So, this address S2 was having this value. Now, S1 will also have this value. So, both of them are pointing to the same object. These are two different variables. These are two different reference variables, but they are pointing to this particular address. Now, when I make this S1 as final, if this S1 is made final, S1 is final means this S1 will always point to this S1 will always point to this particular object. S1 will always point to this object. So, I made this as final. Final means this S1 will always pointing to this object. Able to understand? What we cannot do? We cannot reassign the value of this particular object. I hope you are able to make sense out of this. Now, if I do this final, I cannot reassign. So, student 2 what contains? Student 2 contains address. Now, that address you are trying to assign to this one. So, this is not possible. You will get compile timer. So, reassignment is not possible. ठीक कर सकते हैं. Yes, we can do that. ठीक. Now, can I change the content of this object? What I am saying? Now, we know that S1 is pointing to this object, S2 is pointing to this object. Now, this S1 contains some data, 1 or maybe ABC, whatever it is. Now, can I change the content of this object? So, what is made final? Can you tell me what is made final? What is made final? Address. Now, once again, I have two containers. What is the address? Let's say this is 111 and this is 2222. Now, this is S1. S1 contains this value.
and this contains a object. This contains a object. Now this value is representation of this particular value. So what is made final means this container will have always value 222. This cannot be changed. So this is made final. This is made final. This is made final means this value, which value, this particular value is now final. So this S1 will always point to this object. This is going to point. Now can I change the content of this object? Yes. So what I said, what I cannot change the content of this particular this container. So I didn't say that I cannot change anything. So I can change the content of this particular object. I can change the content of this particular object. Simple, right? I hope you are able to understand this. Check. Okay. Now I will write. I will first of all get the value student 1 dot id, and I will do this student 1 dot name. So I have been 100 and Sachin. Now I will change that value. So I will say after change, I will change that student 1 dot id equal to, let's say, 1000 or 10,000. Student 1 dot name equal to, let's say, check. I will print that after. I can run this. So if a reference variable is made final, it doesn't mean that object content is final. What is final? The address is final. See here, we are able to change the value. Yes, we are able to change value. Check. Let's if a reference variable is made final, then it doesn't mean object content cannot be modified. It means if a reference variable is made final, then we can change the object content. We can change the object content. Simple. We can change the object content, but we cannot change the reference variable content, that is address. Simple so far? Okay, so you will be able to explain this keyword final. Will you be able to explain final keyword? So if a class is made final, that we cannot extend the class. If a method is made final, then we cannot override the method. If a variable is made final, then we cannot reassign the value or change the value. Perfect? Okay. Now next, if you know the meaning of this final keyword, then we can understand immutable class. So what is immutable class? If a class is made final, if a class is made immutable, then then its object content once created cannot be modified or changed. The next question is,
how to create an immutable class. Very simple. Make the class final, make the data members private and final, make the data members private and final. Do not provide public setters. What else? That's it, right? Remember? Okay, let's try to understand this, how to make a immutable class. Now I know that I have this class student. I want to make this class as immutable. Now what do you mean by immutable and mutable? Immutable means once I create the object of this class, now let me create the object of this class. So I have student class, I have ID, name, two constructors, that's it. Now I create an object of student equal to new student, and I will pass values, let's say 100 and ABC. ठीक है? Now I will print the values student dot ID, and I will give a tab /t student dot name. ठीक है? Now can I change the student object content ID and ABC? Student dot ID, can I change this? 300. Student dot name equal to, let's say, XYZ. Am I able to change now? We are able to change the content. Why we are able to change? No, not final. First of all, this ID and name, these are default, means they can accessible. So if I make them private, now this is blocked. This is blocked. Now this way is also blocked. You cannot access this also, right? Now can I have, now this is blocked, right? This is the first way. You cannot directly access. Why? We have made them private. Now second, what is the first step? Do not make the data members private. Second, do not provide public setters. Now if I have I'm just explaining you. Now I have getters and setters. I will generate the getters and setters. Now since I have provided getters and setters, now can I change the value of this ID now? Yes, student dot set ID, and I can change this to 300. Student dot set name equal to XYZ. Now I am able to set values. Yes. Now I am able to change the content of object. Yes. So what is the next step? Do not provide public. Getters are fine. They are just getting the value. So do not provide public setters. तभी इसको हटा देते हैं. Public setters. ID and name. Now this is also blocked. This way is also blocked. This is the second way. पहले अपन ने क्या किया? डेटा मेंबर्स को प्राइवेट बना दिया. दूसरा पब्लिक सेटर्स हटा दिया. अभी एक और रास्ता है जिससे आप चेंज कर सकते हो कंटेंट इस क्लास का. कैसे? आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो. तो आपको क्या करना है? अभी इस क्लास को बनाना है फाइनल. आपको बनाना है इस क्लास को फाइनल. परफेक्ट. अभी दूसरा एक और चीज है. अभी इस क्लास के अंदर एक मेथड है, प्राइवेट मेथड है. इज अ प्राइवेट मेथड, प्राइवेट void display. Now I can change the content of this particular variables. I can change the content. Yes. ID equal to 100, name equal to XYZ, whatever it is. I am able to change. Yes, I am able to change. But the moment I make this is final,
Now this is also now final. So you are getting compile time error because you cannot change the content in the same method also. So we have removed that also. Now what is the error? Now when you make your data members private, when you make these data members private and final, so we get a compile time error. Why? ये आपको कंस्ट्रक्टर हटा देना है. तो जब भी आप आपके मेंबर्स क्या करते हो तो आपको देना है ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर. आपको क्या नहीं देना है? जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. क्या बोल रहा हूं मैं फिर से? अब ये दे दिया तो अभी इसमें ये एरर क्यों दिखा रहा है? व्हाई इट इज गिविंग मी एरर? हाँ, अभी अगर आपने जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो इनको असाइन कौन करेगा? डमी वैल्यूज. लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं करता डमी वैल्यूज. वो चाहता है कि डेवलपर उसको वैल्यूज प्रोवाइड करे, वो फाइनल हो जाए. आपको चाहिए कंपलसरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो ये आपको हटाना पड़ेगा. समझे? क्लियर ऑन दिस? अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल प्राइवेट फाइनल बनाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कंपलसरीली ऑल आर्गुमेंट्स. एक और दूसरा एक जुगाड़ है. क्या जुगाड़ है? आपको लेट से कंस्ट्रक्टर देना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू दे दो 100 और XYZ. लेकिन ये सबकी फाइनल वैल्यू यही बन जाएगी. सारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू यही बन गई फाइनल. देयर इज नो यूज इफ आई क्रिएट 100 ऑब्जेक्ट्स, सबकी वैल्यू सेम रहेगी. तो ये दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. तो आपको देना है कंपलसरीली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. मतलब ऑब्जेक्ट का आपको क्या डेटा चाहिए, राइट? वो फाइनल होना चाहिए. इट शुड नॉट बी चेंज. तो आपको देना पड़ेगा कंपलसरीली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल के लिए. ठीक. अगर मैं कोई एक लेट्स से स्टूडेंट का कॉलेज नेम है, पब्लिक फाइनल स्ट्रिंग कॉलेज नेम. अभी यहाँ पे देता लेट्स से पुणे यूनिवर्सिटी. अगर मैं हटा देता हूँ ये वैल्यू तो आपको आएगा कंपाइल टाइम एरर. क्यों? क्योंकि आप कोई चीज़ फाइनल कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ वैल्यू भी होना चाहिए. देन ओनली यू कैन मेक दैट फाइनल. देन ओनली यू कैन मेक दैट फाइनल. अदरवाइज यू हैव टू रिमूव दिस फाइनल कीवर्ड. तो आपको एक और अभी यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे आप वैल्यू फाइनल कर दो. एक और ऑप्शन भी है. आप स्टैटिक ब्लॉक लिखो, उसके अंदर कॉलेज नेम की वैल्यू आप असाइन कर सकते हो क्योंकि ये स्टैटिक है. सॉरी, क्या हुआ? नॉन स्टैटिक. ओके. हाँ, हमें चाहिए स्टैटिक. परफेक्ट. मैं वही सोचूं. तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते थे उसको. तो अब ये स्टैटिक कॉलेज नेम है आपका, और आप यहाँ पर भी उसको वैल्यू सेट कर सकते हो. दोनों जगह पे नहीं कर सकते, ओनली एक ही जगह पे. आइदर दोनों में से एक. यहाँ पे एक तो यहाँ पे कर दो या यहाँ पर, दोनों में से एक. दोनों नहीं चलेगा. एक ही बार वैल्यू असाइन कर दी, उसके बाद वो चेंज नहीं होगी. वो उसके बाद चेंज नहीं होगी. तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट. पब्लिक फाइनल स्टैटिक, इसे बोलते हैं कांस्टेंट. और कांस्टेंट का नाम आप ऐसे लिखते हो. कांस्टेंट कैसे क्रिएट करते हैं हम? उसका लिखने का स्टाइल ऐसा है. कैपिटलाइज एवरीथिंग एंड सेपरेट देम विद हेल्प ऑफ अंडरस्कोर.
सिंपल। हाँ, कैप्स लिखते हैं और वर्ड्स को सेपरेट करते हैं अंडरस्कोर से। रिकमेंडेशन, इट्स अ रिकमेंडेशन, रूल नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, वैलिड आइडेंटिफायर। इट्स अ रिकमेंडेशन, गुड प्रैक्टिस। और पब्लिक फाइनल सेटिंग होना ही चाहिए। हाँ, तभी आप इसका आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, सेटर से भी एक्सेस नहीं कर सकते। आप एक बार क्रिएट हो गया, दैट्स इट, आप बस उसको एक्सेस कर सकते हो यूजिंग गेटर्स, गेट आईडी, गेट नेम, दैट्स इट। आप एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, दैट्स इट। सो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ व्हाट इज इम्यूटेबल क्लास, हाउ टू क्रिएट इम्यूटेबल क्लास, तो आपको ये बताने आना चाहिए। क्या हुआ, डेमो क्लास, ओके। आप बस उसको एक्सेस कर सकते हैं, एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके बाद उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव मी सम नेम्स ऑफ प्री डिफाइंड इम्यूटेबल क्लासेस, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? So this is your first question, what is immutable class, how to create immutable class and predefined immutable classes. So give me some list of immutable classes. So what are the immutable classes we have? All wrapper classes, string class. So string class is a wrapper class. So string is a predefined class present inside the java.lang package. Wrapper classes में आपके पास क्या क्या है? Byte, short, integer, long, character, float, double and boolean, ये सारे wrapper classes है, ठीक है। Now if I open string class, if I open string class, this is a mutable class, you will find this is a final class, so they are saying it is a immutable class. Once you create the object, you cannot modify this. So you have made everything, you will find this as private, you will have everything private. These are the constructors we have, but everything you will find as private. You will not have anything which is changing the state of an object. What do you mean by state of an object? State means instance variables. State means instance variables. ठीक है? State means instance variables. Object has state and behavior. Object has state and behavior means state means instance variable and behavior means your instance methods. तो एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, फिर आपने उसको बोल दिया कि इम्यूटेबल है, then you cannot modify the content of that particular object. Clear so far? Clear, right, so far? Okay. Okay, so we'll start with something basic and then we can go ahead with some other OOPS concept. So this is one part of your OOPS only. Immutable class, what is immutable class, what is final class. There is one more, singleton class. What is singleton? This is actually an interview question, singleton class. So this is also singleton class. What it is, let me explain. It is based on singleton
design pattern. It is based on design singleton design pattern. It is based on singleton design pattern. सिंगलटन क्लास मतलब उस क्लास का मैक्सिमम एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो आप. कितने? एक. So if a class is made singleton, then only one object of that class will be created. If I say a class is singleton, then how many objects will be created for that class? Only one. Next follow-up question will be how to create singleton class. Any idea? Public static public static. Yes. Public panel static. Oh, your outer class cannot be static. Can you create multiple objects of an final class? Final class? Yes. We can create any number of objects. Remember, we can create any number of final class, any number of objects of a final class. Now similarly, we can create any number of objects of an immutable class. Now how do you do that? How to create a singleton class? Yes, how to create a singleton class? First of all, make the class final, make the constructor private, provide one public static method which will return instance, or a object, Okay, let's do that. So I will create a class called as singleton. Now first what we have to do, we have to make the class final, and then I have to provide a constructor. Okay, but I will make it as private singleton. Okay, perfect. Now if I have a main method, and I make this as singleton equal to new singleton. Now you will say that I am able to create multiple objects. But from the same class. How do I avoid this? Okay, first of all, let's we'll come back to this private constructor. Then create one object that is called as private static singleton. Now this is not accessible outside of the class. This is private. This is also private.
So can you access outside of the class? No. So I will create a public method. What I did, I created a method called as get singleton instance. I will call this method as get singleton instance. I will come to this. Don't worry about this. Okay? Now this is the class. This is the class. Now what you did, you made a constructor private. Then you have a static field called as singleton, and object आपने यहाँ पे create कर दिया, और आप ये method लिखा है get singleton instance, static method है, वो return क्या करती है, singleton का object. तो आपने return क्या किया, singleton जो object बनाया, एक ही बार object बन गया, object एक ही बार हमने बनाया, ठीक. उसके बाद that's it, object हमने बना के दे दिया उसको. अभी मैं टेस्ट क्लास बनाता हूँ कुछ, यहाँ पर आप ट्राई करो ऑब्जेक्ट बनाने का उसका. You get a compile time error because you don't have a constructor, you don't have a constructor access. Then how do you do that? Then I do that singleton dot get singleton instance. Here also singleton dot get instance. अगर मैं दोनों को प्रिंट करूं सिंगलटन सिंगलटन 2, तो आपको सेम एड्रेस मिल जाएगा क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको. यू हैव द ओनली वन ऑब्जेक्ट, सो इट विल प्रिंट द सेम हैश कोड वैल्यू और सेम एड्रेस. कैन यू सी? See, so object is not created. So object is only once it is created. Object is created only once. Okay, let's come back to the question, what is singleton class? If a class is made singleton, then that class, how many objects you can create? Only once. So if a class is made singleton, then we can create only one object of that class. Okay. Now how to create a class, how to make create a singleton class? First, you make the class final. Do not provide public constructor, make the constructor private, and provide a public static method which will return the object of this particular. Now you create the object only once. You create the object only once, and then you return the same object. You return the same object. Clear? This is typical developer interview question. They will ask you how to do that. Easy? Okay. If any questions so far? This is all interview material what we have seen today. What is final class, what is immutable class, what is singleton class. This is all your interview material. Okay? Now let's talk about some basic concepts which are needed to understand for the abstraction. So we'll try to understand what is concrete method, concrete class, what is abstract method, what is abstract class. Okay. Now let's try to understand this concrete method. So it is a method defined inside a class with the method body. Example, अभी तक की सारी जो भी मेथड्स हमने डेवलप करी है, सारी मेथड्स वो क्या है?
ये डिस्प्ले मेथड हो गई, इसका बॉडी है, करली ब्रेसेस है, यस। मेथड विच हैज बॉडी is called as, it's a concrete, perfect, simple। अभी तक की जो भी हमने क्लासेस क्रिएट करी है ना, वो सारी कौन सी क्लासेस है? कॉन्क्रीट क्लासेस। क्लास created without any abstract modifier. It is a class which is created without any abstract modifier. What it is? It is a class created without any abstract modifier. What is abstract method? अभी ये क्लास A आपका क्या है? This class A is a concrete class. So what is abstract method? It is a method. It is a method which is created with abstract modifier and does not have method body. Does not have method body. So how do I create a abstract method? So I write abstract keyword and I do not have the method body. I do not have the method body. So this is how you create a abstract method. Okay. Now how to create an abstract class? A class created with an abstract modifier. Let's talk about the example. So I have a class A and there I write a abstract keyword. So class A is called as abstract class. Very simple. Abstract class, this is how we create. I write abstract keyword and I write this class A. Now what is abstract class? Why do we need abstract class? Why we are writing abstract keyword? If I use abstract keyword, what happens? What benefit you get? If I create a method without body, what is the benefit? Why we are creating this abstract method? What is the benefit? Now let's try to understand this abstract keyword. So abstract means incomplete. Abstract means incomplete. So abstract keyword is used to achieve the abstraction. What it is used to? It is used to achieve abstraction. Now this abstraction concept, it was before your Java or any other programming language. So what abstraction means? What abstraction means? I told you abstract means incomplete. Abstract means incomplete. Then what do you mean by abstraction? Abstract means incomplete and abstraction means keeping something incomplete. There is something abstraction. Now I will tell you something, 2-3 analogies and you will understand the meaning of abstraction. So abstraction means
hiding of implementation details and only exposing the functionality. So let's try to understand this. What I said abstraction means hiding the implementation details and only exposing the functionality. So what do you mean by this? Now let's take an example. Now every day we guys make a phone call. हम हर दिन कॉल करते हैं. हम कैसे कॉल करते हैं? डायलर ओपन करके नंबर डायल करते हैं and we call it. But we just call. We are just using the functionality. Do you know how it is working? Do you know how the call functionality is working? How it is getting connected to the network and how it is actually working? How it is checking battery is available or not? What all background services are getting up? Do you know? But still you are able to make the phone call? Yes. So every day we guys ride the vehicle, two-wheeler, four-wheeler. We are able to ride. Do you know how actually the mechanics actually it is working? How engine is working? How many valves are there? How many pistons? Do you know anything? We don't know anything. But still we are able to drive, right? Then we withdraw the money from the ATM. What we do, we just put the ATM and we enter the pin and we just select the option, mini statement, bank balance, or whatever it is. And we are able to withdraw the money also. But how the money is getting withdrawal, do you know? How it is validating your account with the account details, how it is checking whether balance is there or not. It is checking lot many things behind the scene, but do you know that? No, we are just able to use the functionality. So this process of just exposing the functionality, you just use the functionality, rest, do not worry about the how things are working in the background, how it is working, you don't need to worry about that. That process is called as abstraction. That process is called as abstraction, hiding the implementation details, how it is working. You don't need to worry about it. You just use the functionality, just expose the functionality, and you do not worry about the implementation, or the implementation is nothing but the method body we are talking about, or you do not worry about the code or how it is working. So that process is called as abstraction. ये जरूरी क्यों है? Is it abstraction necessary in your real life? Yes, it is very much necessary, because it is always, every company tries to just expose the functionalities what their product is providing, and they do not want to get you into how it is working. They want you to only know the functionality, but how it is working they don't want to know. Similarly in coding also, अगर आपको बस क्या करना है, फंक्शनलिटी एक्सपोज करना है और आपको कोड नहीं देना है किसी को. You don't want to expose your code, you just want to give the functionality. Then we use the concept called as abstraction. तो theoretical आपको पता है कि abstraction ऐसा होता है कि implementation hide करो और functionality expose करो. तो ये कैसे हम possible करते हैं? So how to achieve abstraction in actual coding? So we achieve abstraction in coding with the help of two concepts, abstract class and interface. Now what do you mean by implementing or achieving the abstraction in coding? कैसे अचीव करेंगे? हमें दो चीज़ करना है, एक तो फंक्शनलिटी एक्सपोज करना है और उसका कोड नहीं देना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड करना है. एक तो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हाइड करना है और दूसरा फंक्शनलिटी एक्सपोज करना है. ये दो चीज़ हमें हाईलाइट करना है, ठीक है. तो हम पहले क्या करते हैं, मेथड फंक्शनलिटी. फंक्शनलिटी मतलब मेथड्स. व्हाट डू मीन फंक्शनलिटी? मेथड. तो मेथड हैज़ सिग्नेचर एंड बॉडी. सो मेथड्स एक्सपोज करना मतलब बस सिग्नेचर दिखाओ कि ये मेथड का नाम है, ये उसका इनपुट रहेगा, ये उसका रिटर्न टाइप रहेगा. उसके अंदर का बॉडी आप मत दिखाओ. सो उससे बोलते हैं हाइड करना. तो विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेसेस वी अचीव द एब्स्ट्रैक्शन. यहाँ तक समझ में आ रहा है? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अभी जो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मतलब इनकम्प्लीट मेथड्स होगी वो बिना बॉडी के, मेथड्स विदाउट द कर्ली ब्रेसेस और विदाउट द बॉडी. सो दीज मेथड्स आर इनकम्प्लीट. तो उनको बोलना भी पड़ेगा ना, इनकम्प्लीट, दीज आर इनकम्प्लीट मेथड्स. अगर आप अभी नॉर्मल जावा क्लास में कोई इनकम्प्लीट मेथड लिखते हो, नाउ लेट मी क्रिएट अ मेथड.
Now this is a normal Java class, concrete class, right? Now if I try to create a method, display, that's it. I will not be able to create that because this is a concrete class, and concrete class expects you to have a method, concrete methods. So concrete class will have concrete methods only. What I said, concrete class will have only concrete methods, that is methods with body, that is curly braces. तो कॉन्क्रीट क्लास आपको कंपलसरी क्या करता है कि आपको बोलता है कि आपको मेथड लिखना है तो आप कंप्लीट लिखो, ठीक है, ये समझ में आपको, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इनकम्प्लीट मेथड लिखना है, तो मुझे बोलना भी पड़ेगा कि ये इनकम्प्लीट मेथड है। सो आई से दैट विद हेल्प ऑफ abstract. I say that with the abstract. Now you don't need to write the curly braces. So abstract and curly braces are opposite to each other. Abstract लिखा तो आप body नहीं लिख सकते, अभी दोनों भी लिख दिया तो ये बोलेगा ये हटा दो। अभी abstract लिख दिया तो आपको curly braces नहीं डालना है। अभी ये एक और एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि आपने एक abstract मेथड डिफाइन किया, कौन से, एक कॉन्क्रीट क्लास में, और कॉन्क्रीट क्लास का डेफिनेशन क्या है, कॉन्क्रीट क्लास बोलता है कि मुझे बस कॉन्क्रीट मेथड चाहिए विद मेथड बॉडी। देन वेयर डू आई राइट abstract मेथड, देन आई हैव टू मेक द क्लास abstract, so I have to make the class abstract. Now you do not get the error. So if you want to write incomplete methods, what is the ideal place, where can we write? Perfect. So if you want to write abstract methods, so here so we can write abstract methods only within abstract class and interfaces. These are the only two places. We cannot write abstract method inside the concrete class. Simple? Okay. Let's go back. What is concrete class? Concrete method. Concrete method means a method without with the method body. What is concrete class? A class without abstract keyword and which contains only concrete methods. It is a concrete class. अभी तक जो भी हमने methods create करे, जो भी classes हमने create करे, सारे कौन से हैं? Concrete methods and concrete classes. अभी abstraction हमने देखा कि abstraction means it is a process of hiding implementation details. Implementation details मतलब method body. Implementation details मतलब method body. And exposing the functionality. Exposing the functionality मतलब method को लिखो लेकिन body हटा दो, that's it. बस आपको लिखना है method name, signature और return time, that's it. और उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा abstract. So what is abstract method? A method which is created with the abstract keyword without body like this. आप ये सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। और आप abstract method कहाँ पे लिख सकते हो? Inside the abstract class or interface. You can write inside the abstract class or interface. अगर आप नॉर्मल जावा क्लास या कॉन्क्रीट क्लास के अंदर आप abstract method लिखते हो तो आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा, यू विल गेट अ कंपाइल टाइम एरर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, what all things we can write inside the abstract class. What all things we can write inside the abstract class? बोलो बोलो बोलो। We can write
abstract methods plus everything from concrete class. मतलब उसका मतलब क्या? एवरीथिंग फ्रॉम कॉन्क्रीट क्लास मतलब जो भी अब तक ने आपने लिखा है, इंस्टेंस वेरिएबल लिख सकते हो, स्टैटिक वेरिएबल लिख सकते हो, इंस्टेंस मेथड लिख सकते हो, स्टैटिक मेथड लिख सकते हो, इंस्टेंस ब्लॉक लिख सकते हो, स्टैटिक ब्लॉक लिख सकते हो, कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो, फिर नेस्टेड क्लासेस भी लिख सकते हो, एवरीथिंग. दैट्स व्हाई आई सेड abstract methods plus everything from concrete class. अभी दूसरा, is it compulsory to write abstract methods inside the abstract class? Yes. Abstract method listed as abstract class. Na? We can keep abstract class empty also. It is not compulsory to write. It is a facility. आपको लिखना ही ऐसे कंपलसरी नहीं है, बट फैसिलिटी, आपको चाहिए तो लिख सकते हो. इट इज नॉट कंपलसरी टू राइट abstract methods inside the, मतलब इसका मतलब ये है क्या हम कॉन्क्रीट क्लास के अंदर मेथड लिखेंगे? नहीं, इसका मतलब क्या है कि abstract मेथड लिखना ही पड़ेगा, ऐसे कंपल्शन नहीं है, आपको फैसिलिटी है, आपको मतलब लिखना है तो आप लिख सकते हो, दैट इज अलाउड. बट ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको लिखना ही पड़ेगा. क्या बोल रहा हूँ मैं? अभी देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे abstract मेथड है, हटा दिया तो कोई कंपाइल टाइमर आ रहा है मुझे? नथिंग. सो आई कैन कीप इट एम्प्टी, बट देर इज नो यूज ऑफ अ क्लास इफ यू कीप इट एम्प्टी. आप क्लास क्रिएट कुछ ना कुछ तो लिखोगे. तो abstract मेथड नहीं लिखना है तो उस क्लास को आप abstract क्यों बना रहे हो? आप उसको कॉन्क्रीट बना दो, राइट? मतलब ये फैसिलिटी आपने ले ली है ना, तो उसको यूज भी करो. ऐसा कंपलसरी है कि आपको लिखना ही पड़ेगा? नहीं है, सब कुछ लिख सकते हैं उसका, सब कुछ है. लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है ना, abstract मतलब आपने क्या बोला, ये क्लास कैसी है? इनकम्प्लीट क्लास. व्हेन यू डिक्लेयर दिस abstract, when you declare this abstract, you said that, remember, we cannot create an object of, we cannot create object of an abstract class or interface. क्या बोल रहा हूँ मैं? आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. तो आप मुझे बताओ फिर, राइट? ठीक है, अब ये सबको पता है, राइट? वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ abstract क्लास. इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. क्यों? सिंस, क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? Since it contains, even though abstract class is empty, we cannot create the object of that class. Since class is declared, as incomplete. Remember, even though abstract class or interface is empty, we cannot create the object. क्या बोल रहा हूँ मैं? even though it is empty, अभी ये क्लास है demo1 ref equal to new demo1, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. ये एम्प्टी क्लास है पूरा, इसके अंदर कोई abstract मेथड है क्या? नहीं है. बट स्टिल वी कैनॉट क्रिएट द, देखो ये, तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. अभी इसका कंस्ट्रक्टर है. आपका अगला क्वेश्चन है, ऑल दीज आर हॉट इंटरव्यू क्वेश्चंस. If you are not able to create object of an abstract class,
then how do we call the constructor of abstract class? What is the question? If you are not able to create the object of an abstract class, then how can we call the constructor of abstract class? क्या कर सकते हो आप? आपको पता होना चाहिए इनहेरिटेंस. आपको पता क्या होना चाहिए? इनहेरिटेंस. तो आप इसको क्या करो, एक चाइल्ड क्लास बनाओ. चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स डेमो 1. हाँ कर सकते हैं ना, लेकिन अभी कर सकते तो, लेकिन ये कंपाइल टाइम एरर भी दे रहा है हमें. क्यों? एक कौन सा चाइल्ड क्लास, कौन सा क्लास है? कॉन्क्रीट क्लास. और आप किसको एक्सटेंड कर रहे हो? तो अभी ये गलत है ना. फिर क्या गलत है? नहीं, इम्प्लीमेंट्स भी नहीं. कॉन्क्रीट क्लास का क्या रूल है? थंब रूल. उसके अंदर कौन सी कॉन्क्रीट मेथड चाहिए? लेकिन आपने abstract क्लास एक्सटेंड किया, आपने abstract क्लास एक्सटेंड किया तो विद द रूल ऑफ इनहेरिटेंस जो भी पेरेंट का होगा वो चाइल्ड का होगा, तो उसकी abstract मेथड भी इसका पार्ट हो गई. तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं इसके कारण. तो आप एक काम करो, इस abstract मेथड को हटा दो. इस मेथड को हटा दिया, लेकिन मुझे हटाना भी नहीं है. अभी पहला आपको पता है कि ये एरर क्यों आ रहा था. अभी ये एरर क्यों आ रहा है? हाँ, मतलब इनहेरिटेंस आपने किया है, राइट. आपने एक कॉन्क्रीट क्लास से एक एक्सटेंड किसको किया? एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, राइट. तो अभी बाय द रूल ऑफ इनहेरिटेंस जो भी पेरेंट का होगा वो चाइल्ड को मिल जाएगा, लेकिन चाइल्ड बोल रहा है कि मैं कॉन्क्रीट है, आई एम कॉन्क्रीट, सो आई कैन नॉट एक्सेप्ट incomplete methods or abstract methods. नहीं वो भी चाहिए. अभी पेरेंट्स का ले रहे हो आप विद प्रॉपर्टी, मतलब विद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आल्सो यू इनहेरिट. हाँ, सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. आप क्या बोलो पेरेंट को कि आप वो मुझे एब्स्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, आप हटा दो. वो हटा दिया उसने, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं नहीं ये भी रहे, ये भी रहेगा. फिर आप चाइल्ड को बोल सकते हो कि तुम ऑब्स्ट्रैक्ट बन जाओ. तो अभी क्या हुआ? अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड्स अनदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो ये होल्ड कर सकता है क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, यस. लेकिन फिर भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, परफेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. तो फिर हमें पहला ऑप्शन क्या किया? पहला एब्स्ट्रैक्ट मेथड हटा दो, दूसरा इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, लेकिन फिर भी हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे. तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है उसके अंदर जो कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, उससे यहाँ पे ओवरराइड करो. क्या करना पड़ता है? ओवरराइड. हमने क्या किया? ओवरराइड. अब ये बन गया फिर कॉन्क्रीट मेथड. तो जब भी एक कॉन्क्रीट क्लास एक्सटेंड करता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, then it is always compulsory for that child class to override all abstract methods of the parent class. क्या बोल रहा हूँ? Whenever one concrete class extends another abstract class, then it is compulsory for the child class to override all of the abstract methods from the parent class in the subclass. ये compulsory है. दूसरा, whenever one abstract class extends another abstract class, then it is optional for the child abstract class to override all the abstract methods. इसका मतलब अगर ये abstract class है, अगर मैं हटा भी दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. When one abstract class extends another abstract class, then it is optional for the child abstract class to override the parent class methods. हाँ, ये मेथड बनाया ना. अब ये चाइल्ड क्लास है. सिंपल.
क्या समझे? बहुत कुछ है इसमें बोलने के लिए। चलो, देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. What is the first question? Can we create object of an abstract class? No. Why we cannot create the object of abstract class? Because it is incomplete. If it is empty, then also we can create object. No, even though it is empty, we cannot create the object of an abstract class or an interface. खाली भी रहे तो भी आप उसका object create नहीं कर सकते. Then whenever one concrete class extends another abstract class, then it is compulsory for the child class to override all the abstract methods of the parent abstract class. Whenever one concrete class extends another abstract class, then it is compulsory for the child class to override all the abstract methods of the parent abstract class. समझे? दूसरा, whenever one abstract class extends another abstract class, then it is optional for the child class to override all the abstract methods of the parent abstract class. मतलब ये compulsory नहीं है. बहुत सारा कंटेंट है. इसमें बहुत सारे यूज केसेस हैं जो हमें देखने अभी नहीं, अभी बहुत और हो जाएगा आप लोग को. आई नो कल हम देखेंगे इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, कैसे हम सब क्लास क्रिएट करते हैं इन डिफरेंट वेज, व्हाट आर दी प्रोस एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसका कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं. आप मुझे बताओ, अभी मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, अगर आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो उसका कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करोगे? पहले तो आप सब क्लास बनाओगे, एक चाइल्ड क्लास बनाओगे, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, देन चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल करोगे, तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर में एक इनविजिबल लाइन होता है, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर. तो क्वेश्चन क्या, अगर आपको अब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर उस कंस्ट्रक्टर से ऑटोमेटिक उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. कब? ठीक है, वी आर गोइंग टू कवर दैट लेटर ऑन बिकॉज देयर आर लॉट मेनी थिंग्स वी हैव टू डू. अब्स्ट्रैक्ट क्लास की मेथड्स, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे उनको यूज करना है, वी विल सी दैट इन नेक्स्ट सेशन because I don't want to overburden you, already lot of content. Chalo, once again go back. Final keyword we have seen. Final is a keyword. It is also called as access modifier. Final means complete, no more change. Final keyword आप किसके ऊपर यूज कर सकते हो, क्लास, मेथड, वेरिएबल.
If I use final keyword on a class, then that class we cannot extend. If a method is made final, we cannot override the method. If a keyword is used on particular variable, if a variable is made final, then we cannot reassign the value. If we make a particular local reference variable or any reference variable as final, then we can change the content of that particular object. We can change the content of the object, but we cannot change the reference variable content, right? And remember, we can create any number of objects of final class as well as we can create objects of immutable class, any number of. Then we have seen immutable class. Immutable class means if a class is made as immutable, then we cannot change the state of an object. We cannot change the state of an object means object content आप modify नहीं कर सकते हो. उसके बाद follow question था how to create an immutable class. So we make the class final. We do not provide the public setters and we make the data members private and final. What are predefined immutable classes? We have all wrapper classes. There are 8 wrapper classes: byte, short, integer, long, float, double, and boolean. Here also we can create any number of objects of immutable class. Then we have seen singleton class. Singleton class मतलब उस class का एक ही object बन सकता है. और how to create a singleton class? पहले तो class को final बनाओ, constructor private करो, and उसमें एक public static मतलब एक आपको public static method देना है जो return करेगी आपको उस particular class का object. Then हमने देखा था कि concrete method क्या होता है. If a method is defined inside a class with the method body is called as concrete method. तो ये अभी तक जो भी methods आपने define करी थी वो सारी concrete methods थी. Concrete class, a class created without any abstract modifier. और उस class के अंदर, so concrete class will have only concrete methods. Concrete class के अंदर आपको concrete methods ही मिलेगी. You will not have abstract methods. Abstract method, a method which is created without method body and with abstract modifier. कैसे? पहले abstract keyword लिखेंगे, फिर method का signature लिखोगे और at the end semicolon. Remember, we can write abstract methods only inside the abstract class or interface. We cannot write this inside the concrete class. What is abstract class? A class which is created with an abstract modifier like this. So we write abstract keyword and then we write the like this, class A and this one. Abstract means incomplete. Abstract keyword is used to achieve abstraction. And what do you mean by abstraction? We use abstraction to hide implementation details and only expose the functionality. So what all things we can write inside the abstract class? We can write everything from the concrete class as well as abstract methods. We can keep abstract class empty also. There is no compile time error. And remember, it is not compulsory to write abstract methods inside the abstract class. If you want, you can write or you cannot. Remember, we can create an object of abstract class. We cannot. It should be cannot, right? Typo. That's fine. So we cannot create an object of abstract class or interface since class is declared as incomplete. Even though abstract class or interface is empty, still we cannot create the object. Then whenever one concrete class, these are two again important very object creation part. So there are multiple questions. Can we create an object of an abstract class or an interface? We cannot, even though it is empty. Then inheriting abstract class. जब भी आप कोई इनहेरिट करते हो abstract class तो क्या होता है, एक तो आपको concrete class होगा, एक तो abstract class होगा, सब class. How to execute constructor of an abstract class? So we create subclass
object and call the constructor of subclass. From subclass constructor there will be call to the superclass constructor. Okay, perfect. Let me execute this. So I have a parent class and I made this as abstract. This is abstract, and I have constructor. This is 0 parameter constructor. So this is the constructor of abstract class constructor. Check. When I create a child class, extends parent class. Since parent class does not have, if you see, duplicate class. Okay, we had this one, right? Okay, so I have created child class which extends parent class. Now so I create object of child class. I create object of child class. Now you will assume that now if you see child class constructor, I will create a 0 parameters constructor child. That's it. Now I create an object of child class, then I call the constructor of child class, and there, even though you do not write, there is a call to the superclass constructor like this. Now it will call the superclass constructor and then control will be there. Even though you do not write, this will be automatically added. Let me run this. So what was the question? How to call the constructor of the abstract class. तो क्या करते हैं हम, पहले एक सब क्लास बनाएंगे, फिर वो सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कंस्ट्रक्टर यूज होगा तो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर यहाँ से आपको एग्जीक्यूशन के लिए आएगा कंट्रोल, फिर यहाँ पे आप होता है सुपर. देखो यहाँ पर इवन दो यू हैव नॉट रिटर्न, ये एग्जीक्यूट हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर. देखो तो मैं यहाँ पे डिबग भी लगा सकता हूँ. ठीक, देखो यहाँ पर कंट्रोल आया, यहाँ पर इट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप. कंट्रोल आया चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर पे, और चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से कॉल हो रहा है सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर. दैट्स इट, easy. Now there are a couple of more questions on this particular abstraction, but we will cover that on the next session. Otherwise, अब हो जाओगे